So this is day two of practicing data analytic. In this video, I'm practicing the Python string questions. So let's get start without wasting time. Python string questions. So these are 105 questions, basic to advanced. I'm already solved these 1 to 10 questions in the previous video. I'm already solved these questions. Also solved these questions and also these all questions I'm already solved. Let 1 to 10 I'm already solved questions. These are questions you can try yourself on your laptop. Now I'm starting from 11 questions. So let's get start without wasting time. So this is question number 11. So I'm paste here question number 11. So let's try. First, I'm not the teacher, I'm a student like you, and I'm also practicing the Python and trying to complete my data analytic course to share with you. Share with you. So, okay. The first question is write a Python program to find display the first non-repeating character in a given string. This is a given string, and the questions had to find the first non-repeating character. What is the meaning of non-repeating character? The meaning of non-repeating character, like take a str equals to my hello. So hello, the L is repeat at two times. So don't print this L. L is repeat two times. So don't print this L. Only print non-repeating character. The H is not repeat. At it's repeat in one time. E repeat one time and O repeat one time. So print these words. Not print L because L repeat two times. So how to print this? So and it said the first non-repeating character, not all non-repeating character, only print. So the first non-repeating character is H. So H is a non-repeating character. If I'm here, enter the noun, H is come two times, it's not a non-repeating character. So it's just like a L, similar to H is also repeat two times. So the non-repeating character only present E and O. So first character is E, is non-repeating character. So print the E. Okay. So now let's get start. So I'm applying the loop in this case because I need to check the uh, every character of the string. Okay. So let's for I in str and check if here if str dot if str dot count equals to I equals to 1. So print here, print not print. So print this is non-repeating character. Okay, this is non-repeating character. Okay, I is a non-repeating character. So the non-repeat this is non-repeating character is E, but I want to print only one, not all. So how can we solve this question? This is non-repeating character E, and O is also non-repeating character, and space is also non-repeating character. But I want to print only one character at a time. So I am using I want to I'm using break condition here. When the non-repeating character find and break the condition, the non-repeating character is E, and break the condition after E. Don't print these. So I'm using here break condition. Break. So the non-repeating character is E. If I am removed here H, so the non-repeating character is H. So this is the non-repeating character. This is the way to print the non-repeating character using the loop. We can also do this question using the while loop. So first understand this questions how it works. First I am execute this line str equals to hello. Take a string and applying the for loop for I in str. So I in str, I here all the values comes and the str from the str. So str dot count str
Here your values is str dot count I, str dot count I. So I gives the indexing value, I gives the sorry, I gives the this, and str gives the indexing value. Let's try. Print here I comma and this line. Print here I comma. If I am printing only I, so what the answer come? The answer come is H. Only comes I. H, comma B. So here come is 1. So this line gives indexing, and this gives H. This gives H. This line give this I gives H, and this line gives indexing of H. If you want to print the indexing of this line, so you can use this. You can use this. If you want to print H, so you can use this. Okay. If I am removing this, what will happen? So the H, this line give H E L L O, but this line gives 1 2 1 2 2. It count the value. It count the value. When the H come is 1, so it come 1. When the E come is E, so it come 1. When the L come 1, 2 time L, so L is 2 time. So it count all the values and give their counting value. H repeat at one time, H repeat. If I am here apply H, like H, so H repeat two times, L repeat two times, L repeat two times. But this condition says str dot equals to 1. If equals to 1, so print from here, print this line, if equals to 1, here I. So this is the logic of this question, how to solve. Now let's to solve this question using the while loop. This is method 2, and this is method 1. Okay, so using the while loop, the we can take the same thing. We can take same I equals to 0 is compulsory, and while I greater than equals to str and str, not str, it's must str and print here. This is the same line I'm printing here. Also this line is same. I don't need to print this line. Don't need to here also print this line. But it work similar, and I'm printing here. And I plus equals to 1. This line is very compulsory to execute the line, otherwise your loop is run infinite time. So what the mistake line number is 14. If str, so this is not the correct str bracket equals to this line. So this is the correct line. So that this is non-repeating character 1. So this will print a 1. Why? But I'm printing here I. If str dot count equals to str, here come the indexing value. I think no. Yes, here come str indexing value. So what should we do in this case? Sorry, I'm using this here. And now let's try. Line number 40, str dot count str I equals to 1. So this line is correct. Why it skips? So let's check why this gives error. Line number 40 must be str not bool. I am using the boolean value. But it said that str. Yeah, okay, yeah, it's come the value comes here, boolean value h. So h is come.
So h is equal equals to 1. So this is not correct because h is a string, a boolean, but 1 is not. So I need to here put here indexing value. So how the indexing value come here? If I am using the len, here I am using the len here. So what should we do in this case? Here we can use I. No, this is correct. This is wrong. This is also wrong. When the values come, let's comment this value. Print. I'm using the logic. I'm not copy paste here. So it take time to run the code. Okay. So you need to take sometimes you need to wait. Okay. When the str bracket I, so the print is 1 2 3, I think. No, hel, but I want to print 1 2 3. I want to print 1 2 3, not this. I want to print 1 2 3, not this. Okay, this is correct. I want to print 1 2 3. I want to print 1 2 3. Okay, I think this is correct. This is not the correct. I don't need to print this. If I equals to 1, so here is one come. Wait a minute. I'm trying to print this line. I print I, so come 1 2 3. I am printed this. So it will the most boolean not variable. So here your value come str. So it comes here 1. Sorry, we cannot use this. But we can use this. Str equals to 1. This is correct? Not correct. Here the value come is 1 and 1 equals to 1. So let's ask from the chat GPT what the mistake. Otherwise it take too much time to solve the questions. So the mistake in my give me hint only. str.count characters count का आई अंडरस्टैंड करता है इंडेक्स काउंट कर नहीं करता तो मैं आई पास कर रही हूँ लेकिन आई की वैल्यू 0 1 2 3 है ओके सो जो स्ट्रिंग में काउंट ओके आई अंडरस्टैंड इसमें आई की जगह क्या आना चाहिए एच ई टी सी को काउंट मिले सो जो स्ट्रिंग हेलो में काउंट किस चीज़ को निकालना है इंडेक्सिंग का या करेक्टर का व्हाइल लूप में करंट करेक्टर को एक्सेस करने के लिए str यूज होता है करंट करेक्टर तो इसमें आई की जगह क्या आना चाहिए क्या str ब्रैकेट में आई इट्स करेक्ट इट्स नॉट करेक्ट हाँ बिल्कुल ये सही डायरेक्शन है क्योंकि करंट देता है ओके so this is the correct way but I'm also using the same syntax here. I'm also using the same syntax but last time it also gave the error. Okay, false true false true. Okay, true but I understand but already use this line. str dot count str equals to 1 but I'm already use this but this is non-repeating character is 1 but I'm not want to print 1 here. Oh, what the mistake here str. I'm done the this is the biggest mistake I have done. E, but the problem is here,
not here. This code is already right, but problem is here, not here. Okay, so I'm using my only logical mind, not I'm copy pasting the questions. So this is the method you can use your critical mind to solve the question. Your second method is also completed if I'm removing h here. So the first non-repeating character is h. Okay, so now cut and paste in the VS code, this code. Okay, open file, go to the desktop. So now this is the 11th question. So I'm printing this. This is the 11th questions. Write a Python program to check whether the two string was placed here. This is the data program to display first non-repeating character. These are the two methods you can print. I'm code save the code here. So move to the next 12th question. What is the 12th question? Says that this is your 12th question. Write a Python program to remove all the duplicate value. It says that remove the all duplicate value characters from a string and preserving the order of their first occurrence. Okay. It says that remove the first duplicate value and characters duplicate characters को remove करना है for string में से and preserve करना है the order of the first occurrence जो first occurrence की तरह हमें उनको preserve करना है remove only duplicate value. So we are applying again the loop str equals to my hello. If the character repeats, so remove it and preserve the words. So how this question solved? So let's try. For I in str bracket में print. I'm again if str dot count I if equals to 1, if equals to 1, so it's duplicate. तो क्योंकि यहाँ पे हमारी एक यूनिक वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमारी एक यूनिक वैल्यू आएगी. फर्स्ट हमने एक लिया एंड यहाँ पे हमने फॉर आई इन एस टी आर करा एंड इफ आई एम डूइंग if str dot count equals to 1, so here your value is print is I. Okay, so this is your non-repeating value h. So these your non-repeating value. Remove the duplicates. So here your duplicates is removed. Here your duplicates is removed. Here your duplicates is removed. So and your Python program remove all the duplicate character. The duplicate character is double L. So your character is removed and from the string preserving the order. इनको order में करना है of their first occurrence के order. So I am using end here equals to this. So this is the order of your words. This is the order. If I am using here space, double space, so double space is repeating. Double space is repeating. So here your space is removed. Not sorry. I'm using this is higher space. So here is space removed. If I am remove one space, so the space is not repeating. Space is not repeating. So space is printed. Okay. So here I want to print only duplicate value. So this is the correct way to print the words. So let us from the ChatGPT according to this question my syntax is correct or not. Let us from the ChatGPT. My syntax is correct according to question or not. Let us नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंटेक्स करेक्ट नहीं है तुम्हारा कोड ये सिर्फ नॉन रिपीटिंग करेक्टर प्रिंट कर रहा है लेकिन क्वेश्चन का रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स करेक्टर्स व्हाइल प्रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अकरेंस एक्सपेक्टेड आई टू एच ई एल ओ आएगा
HELO. Okay, okay. It says that remove the repeated character. इस character को remove कर दो and बस एक ही character को रहने दो. यदि ये duplicate मैंने remove हो रहा है तो बट एक character को मैंने ये I'm doing this well कि मैंने इतना ठीक कर दिया. But I need to print L. Also print L. Okay. So how can we do this question? यहाँ पे मैं print करा L को print for I and preserving the order of the first occurrence की first occurrence इसका मतलब क्या है while preserving the order of the first occurrence मतलब इसका जो order है first इसकी first occurrence को print कर दो and इसको remove कर दो last character को okay यदि equal equals to मेरा 1 हुआ ठीक है okay if I am using here 2 so print L L L here's your L L print. So how this question is solved? How can we solve str equals to for I in str if str dot count I so here's your all the values go str equals to man hello for I in str if str dot count I equals to 1 print I but I want to print as L also I think print I when I print I so the indexing value so what come HHLE okay but this is this is not used in the for loop we cannot use this for loop but I want to print count हमने कर लिया I हमने कर लिया जो रिपीट हो रहा है बस उसको एक बार रखना है एक अकरेंस रखना है उसको रिमूव करना है str equals to hello for I in str if str dot count I equals to 1 colon print I comma and equals to double equals let us from the chat GPT for how क्योंकि डुप्लीकेट को रिमूव करना है लेकिन पहले कर रखना है चेक करो कि करेक्टर पहले प्रिंट हुआ है या नहीं है इफ एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिस्ट में यूनिक करेक्टर को स्टोर करते जाओ ओके लेट्स चेक द एम्प्टी स्ट्रिंग str स्ट्रिंग्स कस्टमर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी हमारे सीक्रेट और टू काउंट क्वेश्चन कह रहा है चेक करो कि करेक्टर पहले प्रिंट हुआ है या नहीं एक एम्प्टी स्ट्रिंग में प्रिंट करो ठीक है ओके 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 वी कैन प्रिंट दिस एंड स्किप दिस फाइनल रिजल्ट आपको होना चाहिए हेलो तो लॉजिक क्वेश्चन को अकॉर्डिंग है नहीं है ओके चेक करना strings equals to print strings hello here comes hello so I want to remove this hello I want to remove this if first come is string is come so yeah give me hint give me hint str लेके हमने रिजल्ट ले लिया ठीक है एच एच कम तो ये इसके पीछे हुआ ये हमारा हुआ ये हमारा ठीक हुआ बट ऑलरेडी प्रेजेंट है इसको स्किप करना है बस कंडीशन में काउंट की जरूरत नहीं है सोचो इफ इफ क्वेश्चन 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 नॉट इन रिजल्ट यदि ये रिजल्ट की जगह क्या आएगा इसकी जगह क्या आएगा सो लेट इस रिजल्ट की जगह क्या आएगा इफ यहाँ एक इफ कंडीशंस और लगेगी हमारी इफ आई इन स्ट्रिंग्स सो हियर या आस्क फ्रॉम द चैट जीपीटी बस कंडीशन में काउंट की जरूरत नहीं है सोचो ये क्वेश्चन 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 नॉट इन रिजल्ट की जगह क्या आएगा क्या आ सकता है
और आई इन एस टी आई यूज कर रहे हो, आई इज ऑलरेडी इज ए करेक्टर, ठीक है। तो इफ आई नॉट इन रिजल्ट, यदि आप रिजल्ट में नहीं पाया गया तो यहाँ क्या आएगा, इफ, एक सेकेंड, फॉर दिस एंड इफ आई इन, इट सेज दैट इफ आई नॉट इन strings, so print this line, okay. It says that hello, now this code runs successfully. I need to use this line, if I first come h, okay, first come h, not in strings, so for strings, string string this, नॉट इन एच, यदि एच में नहीं है तो आप प्लस कर दो, यदि एच में है तो प्लस मत करो। तो इसके उसको उसमें डाल दो, क्या कहते हैं, अदर केस में, उसको एल्स केस में डाल दो। Now I understand this question how it work. First I execute this line and then this take empty strings for I in str, यदि मेरा str इसमें पाया गया, if I in str, तो here all the comes values this hello. So if I not in strings, if I not strings, okay, तो यहाँ पे समझते हैं इफ आई नॉट इन स्ट्रिंग, यदि मेरा आई स्ट्रिंग में नहीं पाया गया तो आप उसमें प्लस कर दो। आप जो मान लो आप पहले आया एच, तो एच मेरे यहाँ पे एच, मेरा स्ट्रिंग के अंदर मेरा एच पहले से प्रेजेंट इसके अंदर नहीं है तो आप प्लस कर दो यहाँ पे एच, ठीक है। फिर मेरा ई आया, ई मेरा पहले से प्रेजेंट नहीं है तो ई को प्रिंट कर दो। एल, एल मेरा पहले से प्रेजेंट है तो एल को प्रिंट कर दो। फिर एल फिर से आएगा, फिर एल मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे एल को प्रिंट नहीं करूंगा। मूव टू द नेक्स्ट ओ, okay. So this question is work like, so this is method 1, and I'm also trying to this solve this question method 2, okay. So I can take the same string here again, I equals to my 0, and while I get an equals to my len of str, okay, and print these lines again similar. Yeah, result, I can use result, ठीक है। यह एच टी आर पैकेट में आई आएगा, तो ठीक है। ये एच इज नॉट कम, एच इज दिस एंड दिस, trying to solve this question. It gives the error in this line number 70. I need to I plus equals to 1, okay. Line number 17 can only concatenate str not enter to str. Line number 17 str bracket में, so the code runs successfully by using the while loop, also using the for loop. So we can do this using the uh, diff condition, diff function. We can use diff condition, cut and paste here question number. This is a question number 12. Make the file of question number 12 question number 12.py. Okay. Next, move to the next question, question number 13. I know it take too much time to solve the questions, but I'm using my mind and logical thinkings. Don't copy paste. Okay, this is question number 13. Copy this question and paste here. Write a Python program. Check whether two strings are anagram of each other. What is the meaning of anagram? I don't know, but I'm asking from the chat GPT what the mean. Two strings are considered anagram if they contain the same character with the same frequency. Same frequency and same character. Same character मतलब two time come L, so it is the same character. Same frequency मतलब वो two time ही है. Let us from the chat GPT what the meaning of this question and what is anagram. The meaning स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर होने चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, आई भी है, सेम होनी चाहिए, ऑर्डर जो सेम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है।
like listen and silent. Okay, so listen and silent दोनों में सेम लेटर्स हैं और सब वन वर्ड आए हैं. ओके, दिस इज द एनाग्राम. दिस इज योर एनाग्राम कंडीशन. It says that it's your jumble word condition. It's like a jumble word condition. I'm using the same characters and make the another word, and I'm also using the same character again and make the another word. So both the meaning of the both words different, but I'm using the same character in both case. Okay, so दोनों में सेम लेटर हैं और सब एक एक बार आए हैं, तो दिस इज द एनाग्राम कंडीशन. एनाग्राम कंडीशन लाइक रेस केयर. This is care silent and your listen is okay. So anagram this is not anagram. Hello and world it's not anagram because W is not come in hello. Okay, so not program frequency 4 AAAV. So this is also not anagram. Okay, so here come A come two times and B come three times, not equal time. So frequency is not. So पहले दोनों स्ट्रिंग की लेंथ को कंपेयर करना है, फिर चेक करो कि करेक्टर दोनों स्ट्रिंग में सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, काउंट करना है. मतलब अगर सब मैच करें तो एनाग्राम है, वरना नॉट एनाग्राम. तो फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो लेट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. I know this question is solved using the loops. Without loops we cannot solve this. Okay, let str1 equals to में kr. Okay, and str2 equals to में str1 is care and str2 is what the str2 what the str2 is race. Okay, so let's check. First find the length of both the strings. Okay, result length equals to में length dot str str1 and length dot 2. Okay, here also 2, here also 1. Okay, print करेंगे यहाँ पे हम लेंथ ऑफ फर्स्ट check length equals to my. I'm trying to solve this questions using my logical things. After that, I ask from the chat GPT this syntax is correct or not. Okay. So what the answer comes? So I need to print. Yeah, I need one. Print check length. So true. The length of the both string is true. Okay, I'm here print. So the answer come false because the length of this and the length of this is not equals to. Here the length come, here the length come of second string, and I'm comparing the length here and printed this line. So it will answer true or false. The first condition is I'm checked the length, and the second condition और द सेकेंड है फिर चेक करो कि करेक्टर दोनों स्ट्रिंग में सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं या नहीं रहे. अब नाउ इट्स टाइम टू चेक द करेक्टर्स. इट्स टाइम टू चेक द करेक्टर्स फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन str1. हाउ कैन वी चेक दिस एंड अप्लाई. यहाँ पे दोनों पे मेरे को लूप अप्लाई करने हैं. मुझे दोनों पे लूप अप्लाई करनी है. str1 इक्वल्स टू में कैरी, str2 इक्वल्स टू में रेस एंड str लेंथ 1 इक्वल्स टू में len1, len2 इक्वल्स टू में len2 str और चेक लेंथ 1 हो गया, यहाँ पे len2 हो गया. हाउ कैन वी चेक? फर्स्ट एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को दूसरी स्ट्रिंग से फाइंड करना है. सो सी कम ए कम दो कम आर कम ई कम. तो ये चेक करना है यहाँ पे हमें. बट कैसे चेक करें? using the if else conditions. No, equals to yeah str1 in. Oh, can we check this? str1 in str2. I don't know this is correct or not.
I'm trying. I am if I equals to str2, print yes, otherwise print no. Okay, let's try. No, no, no. Okay, no, no, no. क्या आई इक्वल्स टू एस टी आर टू के, बट ये करे ये डायरेक्ट करेक्ट करके केयर इक्वल्स टू यहाँ पे केयर है या नहीं है, बट हियर आई एम प्रिंटिंग, इफ आई एम प्रिंट दिस एंड यदि मैं इन दोनों को सेम कर देता हूँ यस 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 आएगा, तो भी नो नो आएगा। ओके, सो माय लॉजिक इज रॉन्ग। आई तो मेरे आई के अंदर मेरे सारे करेक्टर्स होंगे, सॉरी हम मेरे को यहाँ पे एस टी आर वन करना है ना, यहाँ पर मेरे को चेक करना है एस टी आर टू। अब देखता हूँ यहाँ पे ये वाली चीज़ करके, अब यस यस आना चाहिए, अभी भी नो आ रहा है। ओके, लूप के अंदर यहाँ पे इसका कोई एक्सेस ही नहीं है। क्या हम यहाँ पे फॉर जे इन रेंज भी लगाना चाहेंगे क्या? फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन एस टी आर टू। ओके, क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं? प्रिंट करेंगे यहाँ पे आई कॉमा जे, ये इट्स जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन गई हमारी। सी आर, फिर सी ए, फिर सी सी, फिर सी ई, ठीक है, सी ए, फिर सी फर्स्ट, हाँ फर्स्ट कम सी कम फोर टाइम, एंड फिर दिस कम, फिर ए कम फोर टाइम, फिर दिस कम एंड फिर दिस कम। आई अंडरस्टैंड दिस हाउ द आउटपुट कम, बट दिस इज नॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आई नीड टू चेक। सो गिव मी हिंट, गिव मी to solve this question. Hint number one, len not equals to len टू। फर्स्ट आई एम ऑलरेडी चेक दिस क्वेश्चन, मैं इसको चेक कर चुका हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, अब पहली स्ट्रिंग के करेक्टर पर लूप चलाओ, चला दिया, हर करेक्टर को काउंट काउंट दोनों स्ट्रिंग में कंपेयर करो, एस टी आर वन डॉट आई, एस टी आर वन डॉट टू डॉट काउंट, इफ एस टी आर वन डॉट का रिजल्ट होना चाहिए। यदि नॉट, यदि एक दूसरे के इक्वल नहीं आए तो एलिफ कंडीशन हो, इफ कंडीशन हो जाएगी। अगर लूप खत्म हो जाए और किसी करेक्टर को काउंट मिसमैच ना मिले तो स्ट्रिंग अनाग्राम है। ओके 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 ओके, लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई लेट्स ट्राई। ओके, सो हियर यहाँ पे हमने लूप चला दिया, इफ फर्स्ट हमने लूप चलाया, यहाँ पे हमने लूप चलाया एस टी आर वन पे, एंड काउंट करना है हमें एस टी आर टू एंड एस टी आर दिस को। ओके, इफ कंडीशन हम डालेंगे, इफ एस टी आर वन दिस ना, एस टी आर वन डॉट काउंट, तो यहाँ पे काउंट में क्या आएगा हमारा एच आएगा, इंडेक्सिंग वैल्यू देखिए, नॉट इक्वल्स टू में एस टी आर टू डॉट काउंट नॉट इक्वल्स टू में आई, सो प्रिंट नॉट, प्रिंट यस, यस 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 यस, बट ये एक दूसरे के इक्वल, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ई, सो ओके, यस यस नॉट नॉट, ये फर्स्ट कंडीशन है तो हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक है। लेंथ आई नहीं आई तो, नहीं तो यहाँ पे इफ एल्स में यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी, ठीक। सो रिमूव दिस लाइन,
if len of str1 equals to len of str2 तो प्रिंट सो लूप आगे चलेगा। ठीक है, तो ये वाला लूप चलेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे यदि ये दोनों एक दूसरे को करेंगे तो ये लूप चलेगा, नहीं तो अदरवाइज एल्स कंडीशन है। यहाँ पे फिर फॉर लूप चलेगा, यहाँ पे फॉर लूप चलेगा इफ, देखो यहाँ पे रन कर दें, कंडीशन तो गलत नहीं होनी चाहिए। लाइन नंबर 7। ओके, यार ये कंडीशन चलेगी तभी तो, ये कंडीशन हमारी इक्वल है, एल्स कंडीशन हमने अभी प्रिंट ही नहीं करी है। सो यस यस यस। ओके, तो प्रिंट हमारा ये चलेगा यस 1 2 3 4 टाइम चला है। ठीक है, बट एच टी आर वन डॉट काउंट, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, एक बार देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था एच टी आर डॉट वन काउंट हम करते थे, तो यहाँ पे आता था इसका 1 2 3, ये कह दे रहा हमारा 1 2 3 को जनरेट कर रहा है। यहाँ पे ये हमारी इसको जनरेट कर रहा है, काउंट कर रहा है, ये 1 टाइम आया, ये 1 टाइम आया, ये 1 टाइम आया, ये 1 टाइम आया, तो इनको एक काउंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, काउंट करने का टाइम काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा काउंट करने का टाइम कर रहा है। यदि एस टी आर वन नॉट इक्वल टू में एस टी आर टू, यदि मान लो ये वाली चीज़ अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, सेम चीज़ को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, इसी लाइन को मैं यहाँ पे 2 बार प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे 2 का भी, ठीक है, 1 यदि एक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों, ये सारी इंडेक्सिंग वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं। एस टी आर वन की भी 1 टाइम करेक्टर, ये हमारा ई मैंने 2 टाइम में प्रिंट करा था, तो ये मेरा 2 टाइम प्रिंट होगा। ओके, जो यहाँ पे एल्स कंडीशन में चला गया, एल्स कंडीशन मेरी यहाँ पे है ही नहीं, एल्स कंडीशन यहाँ पे मेरी अभी है ही नहीं, एल्स कंडीशन यहाँ पे अभी मेरी है ही नहीं। ओके, अब देखते हैं, गिव मी हिंट, आज फ्रॉम दी हिंट, हिंट मांगते हैं भाई, क्या करें, नहीं हो रहा तो सॉल्व। गिव मी हिंट, तुम्हारा लॉजिक ऑलमोस्ट सही है, बस एक प्रॉब्लम है। हिंट केयर और रेस के लिए लूप कितनी बार चलेगा? 4 टाइम चलेगा ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5 टाइम चलेगी, 5 वर्ड्स है, आउटपुट में 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ एक बार फाइनल आंसर चाहिए, एनाग्राम। नेक्स्ट हिंट, जैसे ही कोई मिसमैच मिले नॉट एनाग्राम प्रिंट करके लूप स्टॉप कर दो। अगर पूरा लूप कंप्लीट हो जाए और मिसमैच ना मिले तो एनाग्राम प्रिंट करो। फाउंड, और एक फ्लैग वेरिएबल ले लो, फाउंड इक्वल्स टू में 0 इज एनाग्राम इज ट्रू। ट्राई करो खुद कंप्लीट करने की। ओके यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, गिव मी हिंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। हाँ, हम ना एक टाइमर लगा के चलेंगे, अगर हमसे 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, सब टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ 44 मिनट वीडियो। सो हमें हर 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर 10 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो आई एम टेक द टाइम, स्टॉप वॉच। अगर 5 मिनट में, 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आस्क फ्रॉम द चैट जीपीटी। If this question not solved in the 10 minutes, so we ask from the chat GPT how to solve, because it's a time wasting, and I'm also I'm using my mind, not
while I'm using. अगर लेंथ अलग है, okay, 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 okay. So I need to take a break and now can you solve this question? Wait, अभी इसको नेक्स्ट क्वेश्चन से लगाएंगे इस चीज को, है ना? हाँ, सॉल्व कर सकते हैं तुम्हारे अप्रोच का यू को यूज करके. सो दिस इज द देखो, first it take str1 and str2, and after that if len str1 not equals to len str2 प्रिंट करेंगे एनाग्राम, अदरवाइज अदरवाइज इसको कर देंगे हम ट्रू. व्हाट द मीनिंग इज, इफ नॉट इक्वल, यदि तो ये दूसरे के इक्वल नहीं हुए तो प्रिंट कर देंगे यहाँ पे हम एनाग्राम, नहीं तो यहाँ पे हम कर देंगे ट्रू और हमारा लूप यहाँ पे आगे हमारा बढ़ेगा. यहाँ पे हमारा पूरे स्टॉप नहीं होगा, बस यहाँ पे यहाँ से हमारा ट्रू करके हमारा आगे बढ़ने लगेगा. फॉर आई इन एस टी आर नॉट इक्वल टू दिस, तो इस एनाग्राम हमारा फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, और फिर से यहाँ पे बस एनाग्राम प्रिंट, मतलब काफी हद तक हो गया क्वेश्चन ये. यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ये ना लेके इन्होंने यहाँ पे करा कि आप प्रिंट, आप करो यहाँ पे प्रिंट नॉट एनाग्राम, नॉट एनाग्राम्स, एनाग्राम्स क्या है, नॉट एनाग्राम्स, एल्स कंडीशन में करो यहाँ पे इच एनाग्राम में ट्रू कर दो एंड योर लूप एंड योर कोड रन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट. आई एम नॉट द टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम आल्सो लर्निंग हियर. ओके, सो here if str, this is str1, this is str2, if len equals to here, and I'm moving to the next line for I in str, if this line is not equals to print here is anna, is anna equals to false. Okay, is anna equals to false, and break here, break here. Okay, so I'm using this is anagram. यदि is anagram is true, so print this is anagram, otherwise print this line. Line number 15 is Anna. Line number 15 is Anna. Is Anna is correct, yeah. What the mistake? I'm not defining Anna. So I need to define its anagram. Its anagram. Is anagram. Is anagram. Is anagram. What the mistake? Is Anna is right. Is Anna is not defined, but I have defined here. Yeah, is Anna at the beginning. First to me. So this is anagram. This is anagram. This is but not anagram. Why it gives not anagram? What the condition not anagram when length not equals to, when the length is not equals to the not anagram. So this is anagram. As I am pasted not anagram, not anagram. So what the condition first is break, and break also here. I'm also using break. Break. The break is used in the loops, not here. Break cannot be used here. Okay, sorry. I think we can use it. Break, break outside the loop. Outside the loop. So we can use the break inside the loop, not the outside, not in the if condition. But I want to not anagram. This condition is also printed, and this condition is also printed. But I'm not want to print this line if this line execute.
Okay, so here I think I need to print this. This is correct, not anagram. Okay, this is not an what the line fix. It it asks from the this line first, and this line is also first, and this line str. Okay, not anagram, otherwise else condition print. Wait, now okay. What the mistake we have done? We have done the mistake is what the mistake we have done. Sorry. Don't need to write this line. This okay, and this and paste here. This line paste here. This is anagram. This is anagram ns, not anagram and line number 14. Is ni is not defined. Why is ni is not defined? I'm applying the for loop here. If for loop here and if okay say this is correct, this is correct, break otherwise okay. I need to take this. I need to also because indentation is very mixed, not anagram. Okay, now now this code runs successfully. How this code worked? So let's I'm explain. This is str1 and this is your str2. I'm checking the first condition if len str1 not equals to len str2. When I'm finding the length of str, so 1, 2, 3, 4, the length is 4 and the length is 4. When both the length are not equal, so print this line. If the both the lines are equal, so print this line. So the now the what the length have equal, so I'm executing this line, so this line executed from starting to end here. Okay, so this line this is true. After that print this. If this condition is false, so this condition not printed. If this condition is so print this line. So for I in str, I'm applying the loop in the first string. I'm applying the loop in the first string str1. If str1 dot count, it count the index, it count the number of occurrence, number of characters available in the string using the numbers in the form of numbers. If c come one time, so c value is 1. If c come two times, so c value is 2. Otherwise c value 1. If both the values not equal, if one not equals 1 equals to here 1 here c is 1, here c is 1, so 1 equal 1, so true. So true, so this line is not executed and this line is also not executed and it come out from the loops and print this line. So each anagram is true, each anagram is true, so this is print this line. I understand how the code is works. For your perspective, I'm telling the chat GPT explain this code in detail. 1 hour completed. So you can understand from here दोनों स्ट्रिंग बन गई यहाँ पे केयर एंड रियल। लेंथ हमने चेक करी तो लेंथ दोनों की 4 है, तो क्या नॉट इक्वल है, फॉल्स कंडीशन हो जाएगी, तो इफ ब्लॉक स्किप होगा और एल्स में जाएगा। यहाँ पे आपका ये वाला ब्लॉक स्किप होगा, दोनों की लेंथ है, तो हमारा एल्स में यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, फ्लैग वेरिएबल इज ट्रू, एक हमने फ्लैग वेरिएबल लिया इज ट्रू, स्टार्टिंग में हमने इसको ट्रू मान लिया, एक फ्लैग वेरिएबल बनाया इज ट्रू।
इन्होंने एक फ्लैग वेरिएबल बनाया एस टू, लूप स्टार्ट करा और आई इन एस टी आर, तो सारी वैल्यू आई की वैल्यू यहाँ पे हमारी प्रिंट होंगी आई के अंदर, ठीक है। इफ आई इक्वल्स टू हमारा फर्स्ट करेक्टर हमारा ये उठाएगा, यहाँ पे काउंट करेगा आई हमारा कितनी बार आया, वन बार आया है, मतलब आई जो हमारा सी आई कितना बार आया हमारा, वन बार आया है, वन टाइम, इट्स कम वन टाइम इन दी, जैसे हम नॉर्मल अगर हम फाइंड करते थे तो हम वैसे नॉर्मल फाइंड करते हैं ना हम काउंट का यूज करके। ओके, फिर यहाँ पे हम आई हमारा वन टाइम आया, फिर एस टी आर टू को काउंट करेगा, कितनी बार आया, वन बार आया। अब इन दोनों को चेक करेगा, कंडीशन को यहाँ पे हमारा चेक करेगा। यहाँ पे जब दोनों वन वन बार आ जाएंगे तो नॉट इक्वल टू में चेक करेगा, यदि हमारे नॉट इक्वल टू है तो कुछ नहीं होगा, मतलब फॉल्स, कुछ नहीं होगा, कुछ मत करो। इटरेशन में आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर ए को चेक करेगा, ए नॉट इक्वल्स टू वन, तो कुछ नहीं करो, लाइक दैट सारे करेक्टर्स को ये यहाँ पे काउंट करने वाला है, इटरेशन फोर, लाइक सारे में काउंट काउंट करेगा, लूप कंप्लीट हो जाएगा। फिर इज एन ए, अभी भी ये हमारा ट्रू है, ये हमारा अभी भी फॉल्स नहीं हुआ, ये हमारा फॉल्स नहीं हुआ है, तो फाइनल चेक करेगा इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स कंडीशन, सो दिस इफ ट्रू, दिस इज ट्रू, सो दिस इज एनाग्रो का यूज क्यों किया, ब्रेक का यूज क्यों किया, ब्रेक एस टी आर वन केयर एंड एस टी आर टू केयर, यदि से काउंट सेम है, काउंट सेम है, काउंट सेम है एंड काउंट डिफरेंट है तो यहाँ पे ब्रेक कर दो। यदि काउंट आपका डिफरेंट आया, यदि ये यहाँ पे मान लो आपका टू आया और यहाँ पे आपका आया वन, सो एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आप ब्रेक कर दो इसको, नहीं तो आप कुछ मत करो, यदि एक दूसरे के इक्वल है तो आप ब्रेक मत करो इनको। सो दिस इज, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज करा। ये आपकी टेबल है, आप समझ सकते हो, योर क्वेश्चन इज डन हियर। नाउ दिस क्वेश्चन इज completed, this is the question, I'm also do this question using the value. How? Method number 2, this is your method, method number 1. This question I am doing again, I am taking this again, I am taking this also again, यहाँ से कॉपी कर ले रहे इसको, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, we can do the while loop here, हमने फॉलो अप्लाई करा था बट here I am applying the value, well I then bracket में str1, okay, and this line is also printed, हम इसको भी कॉपी करने वाले हैं, ओके। पहले इसको इतना प्रिंट कर लेते, ठीक है, लिखना नहीं पड़े इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, एस टी आर ब्रैकेट में, यहाँ पे बस इसकी पोजीशन चेंज कर दी, एस टी आर दिस, ओके, ट्राइंग टू रन, अगर एरर नहीं आए, लाइन नंबर 30 में एरर है, लाइन में आएगा हमारा लैन एस टी आर वन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंट ऑफ एस टी आर एंड इंट, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, रीजन ये तो सपोर्ट करता है, आई, ओके, हमने आई की वैल्यू जीरो नहीं ली एट द बिगनिंग, लूप से बाहर हमें आई इक्वल टू जीरो लेना है, आई इक्वल टू जीरो, आई इज नॉट डिफाइंड and here need to apply I plus equals to 1, line number 32, if type str is not subscriptable, str नहीं, str1 रो, str1 str, this is an anagram, this is anagram, so print this line is printed here, this line is printed, but I'm not want to print this line, anagram, I'm using this and print here this, okay, and also here print this, and your code run I think successfully.
Line number 37. What the mistake? Line number 30, indentation. This is your indentation issue. Print this line at the last in the index. Okay. So this is anagram. This is anagram. It run four times. There is any reason why this run four times? So method 2, I am taking both the same variable length str1 str2 okay not equals to is anagram. I am taking this different str1 str dot count ठीक है this done false and break the condition and I am using the I plus it's come here no okay why it printed at the four time anagram I am printed one time here na and anagram I am printed here one time if I am comment this code so what will happen anagram it printed four times this why I plus equals to में one is anagram I am मैंने सब कुछ ठीक करा है len str1 नॉट इक्वल्स टू len str2 प्रिंट करेंगे यहाँ पे नॉट anagram else करेंगे इज anagram इक्वल्स टू ट्रू I equals to 0 while I greater than len str1 okay this is correct str1 डॉट काउंट str1 दिस सही है ये भी ठीक है ये भी ठीक है तो फोर टाइम क्यों आ रहा है इफ आई एम यहाँ पर मैं यहाँ पे करता हूँ एस तो नॉट एन अग्रो दिस कंडीशन प्रिंट वन टाइम बट दिस कंडीशन बाय प्रिंटेड फोर टाइम let us from the chat gpt is there any mistake in this code or the mistake तुम्हारे लॉजिक में मिस्टेक इंटेंटेशन की है ओके व्हाट द मिस्टेक इंटेंशन प्रॉब्लम नंबर वन इफ ये वाइल लूप के अंदर है एक सेकेंड आई एम चेकिंग माई मिस्टेक yourself while ये 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 वाइल लूप के अंदर है इसलिए हर इटरेशन में प्रिंट होगा so it come here sorry come here this come here and this come here so this is electron now it's solved indentation issue था so the problem is solved line number 3 what the mistake in line number 3 so this is anagram and this is anagram what the anagram I'm here I'm also using here listen 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 and also the other word is listen and silent okay silent this is anagram and this is also anagram so both the loop runs successfully this is your while loop let's check the code this is the while loop and this is your for loop okay this is your for loop let's copy this and x and print here print like this is the question number 13 question 13.py so now I'm thanks for watching my video
Now this video is completed. I have solved here four questions in this video in details and how to use our logics to solve the problem. Not all time to copy paste the code, but try to solve the questions using the logical mind, logical thinking, and trying to solve to think the questions. I know all the students are beginner and all of the students not expert. Only some students are expert to solve the questions easily, but not all. So you can use the chat GPT, you can use your mind to solve the question. If you don't have teachers, so you can uh, ask, you can tell the chat GPT to give me question about this topic and help me to solve this question. So you can solve the questions like this. Okay, so thank you for watching my video, and I'm making the another video on these things to solve the basic to advanced 105 questions, 105 questions complete.